Screen is visible na? Yes, sir. Okay. So last lecture we have seen the no remote memory access. So here you cannot access the remote memory in a multi-processor. That is another technique. Then next is cache coherence in a multiprocessor. So in a multiprocessor system, data inconsistency may occur among the adjacent level of within the same level of memory hierarchy. अभी मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है, इन अ मल्टी प्रोसेसर प्रोसेसर शेयर द सेम मेमोरी एंड समटाइम्स प्रोसेसर हैव इट्स ओन मेमोरी, है कि नहीं? प्रोसेसर का खुद का क्या होता है, मेमोरी होता है. So sometime what happens, suppose there are 5 to 6 processor which is share the same memory, but what happen, suppose multi-processor 1, that is processor 1, write something data and have the value of x is equal to 24. ऐसा मान लो कि प्रोसेसर x प्रोसेसर 1 ने है x की वैल्यू 24 कर दी, ठीक है? Then it store in its own memory, understood? Then after some time, then the other processor, that is processor 2, processor 3, processor 4 and processor 5, they think that the value of x is 24, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मेमोरी क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अंडरस्टूड? अभी बाद में क्या हो जाएगा, बाद में that particular processor x again update the value and write x is equal to 65 for example. Then what happen, so it is updated in its own memory, and still the processor 2 3 4 5 think that the value of x is 24. That is a cache coherence. That is a data inconsistency. So in a shared memory multiprocessor with a separate cache memory for each processor, it is possible to have the many copies of one instruction open, one copy in the main memory and one in each memory. So when one copy of an operand is changed, the other copies of the operand must be changed also. अब ये देखिए, so cache and the main memory may be inconsistent copies of the same object. For example, here these are the three CPU and they are sharing the this particular memory. आपको दिखाई दे रहा है processor? How many Yes, processor are sir. there? How many processor? Three. हाँ, Three. थ्री प्रोसेसर आर देयर. अभी यहाँ पे क्या होता है, हर प्रोसेसर का कैचे वन, सी पी यू वन मीन्स प्रोसेसर वन का क्या है, कैचे वन है. सी पी यू टू का कैचे टू है. सी पी यू थ्री का कैचे थ्री है. अभी यहाँ पे क्या है, हर प्रोसेसर का खुद का क्या है, क्या है खुद का, Catch it. कैचे मीन्स मेमोरी, अंडरस्टूड? अब ये मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी इज कॉमन मेमोरी. सो ऑल दिस पर्टिकुलर प्रोसेसर, दैट इज सी पी यू वन, सी पी यू टू, सी पी यू थ्री, आर शेयरिंग दिस मेमोरी. और इस मेमोरी में वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 24 है. कितनी वैल्यू है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 24. 24. रिप्लाई देते जाइए फास्ट, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ. ओके, सो इफ this particular processor 1, processor 2 and processor 3 want to access the shared memory, at that time they think that the value of x is 24 because they have the copy, means the value of x is 24 here, and also they have this particular value of x in their cache. अभी ये वैल्यू किधर रहेगी, ये मेन मेमोरी शेयर मेमोरी में रहेगी और हर प्रोसेसर के कैचे में रहेगी. हर प्रोसेसर का क्या है, खुद का मेमोरी है. देन अभी क्या होता है देखिए, प्रोसेसर वन रीड एक्स ऑप्टेन 24 फ्रॉम द मेमोरी एंड कैच इट. अभी प्रोसेसर वन है मीन्स दिस सी पी यू वन कैन
try to read the value of x, and he get the value of x is 24, and he store that particular value x is 24 into his own cache, into his own memory. समझ में आ गया? प्रोसेसर वन ने रीड किया एक्स की वैल्यू और खुद के मेमोरी में क्या किया, स्टोर किया. Processor 2 read X obtain 24 and from the memory and cache it. Processor 2 ने भी क्या किया, he want to get the value of X, so उसने भी क्या किया, वो कॉपी किया और वहाँ पे अपने मेमोरी में रख दिया X इज इक्वल टू 24. ठीक है, दोनों में प्रोसेसर ने क्या किया, वैल्यू क्या किया, X की रीड किया. अभी यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया कैचे वन में, 24. कैचे टू में 24. 24. वेरी गुड. अभी देखो अगेन, अगेन दिस प्रोसेसर वन राइट्स x इज इक्वल टू 64. अभी इसने क्या किया, x ने कुछ से भी इंस्ट्रक्शन दिया और x की वैल्यू चेंज किया. अभी कितना किया इसने, x की वैल्यू 64 किया. कितना किया, 64. सो इट इज लोकली कॉपी, कैचे कॉपीड इज अपडेटेड. नाउ प्रोसेसर 3 रीड्स x, व्हाट इज द वैल्यू शुड गेट. अभी यहाँ पे ये इस कैचे में कितनी वैल्यू है, 24. 24. इसने अपडेट किया वैल्यू, यहाँ पे कितने आ गई है इसकी वैल्यू, बोलिए फास्ट, गलत रहेगा तो बोलिए ना. 24. कितना, हाउ मच, 24. नहीं अभी एक्स ने ये किया ना. अगेन प्रोसेसर वन राइट्स एक्स 64. पहले रीड किया था 24, वापस उसने क्या किया, रीड किया. सो लोकली कॉपी इट्स अपडेटेड. नाउ प्रोसेसर वांट टू रीड द वैल्यू ऑफ एक्स, so what should it get, so memory and processor 2 think it is 24, processor 1 think it is a 64. अभी वन ने क्या किया, अपडेट किया यहाँ पे वैल्यू और उसने उस खुद का कॉपी किया. पर प्रोसेसर सीपीयू 2 में क्या है, वैल्यू ऑलरेडी 24 है. सो मेमोरी एंड द प्रोसेसर थिंग टू थिंग्स इट इज 24. सो उस मेमोरी को वैल्यू लगती है 24, इसको भी वैल्यू लगती है 24, बट इसने क्या किया, अपडेट किया और उसके खुद की मेमोरी में रख दिया 64. अंडरस्टूड. So as multiple processor operate in a parallel and independently, multiple cache may process the different copies of the same memory block. So this create a cache coherence problem. समझ में आ गया? अरे समजते का मराठीत सांगू आता. हेलो. Yes, sir. हाँ, पहले क्या किया इसने, एक्स की शेयर मेमोरी में एक्स की वैल्यू कितनी थी, 24. 24 थी. इसने रीड किया, कितना वैल्यू रीड किया, सीपीयू फर्स्ट ने, प्रोसेसर फर्स्ट ने, 24. 24. वेरी गुड. और कहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे उसके खुद के मेमोरी में, बराबर. Yes. ठीक है, बाद में वापस इसने रीड किया वैल्यू एक्स की, किसने, सीपीयू 2 ने, मीन्स प्रोसेसर 2 ने. कितनी वैल्यू है एक्स की, अरे फास्ट बोलिए 24. यार. 24. हाँ, 24. कहाँ पे ये करेगा वो, मेमोरी में, उसके खुद की मेमोरी में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया. ठीक है, यस. Yes. Yes, sir. हाँ, अभी देखिए, अभी बाद में क्या हो गया, देन आफ्टर सम टाइम दिस पर्टिकुलर सीपीयू 1, that is processor 1, write the value, means update the value x is equal to 64. x की वैल्यू कितना किया, 64 किया. एंड ही जस्ट have this particular updated value in its own memory. उसके खुद की मेमोरी में क्या किया, अपडेट किया, राइट कर दिया. इसकी वैल्यू कितनी है, 64 उसने कर दिया. ओके. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अभी
बट यहाँ पे अपडेट होगी क्या वो वैल्यू, उससे खुद की मेमोरी में अपडेट की, राइट किया, यहाँ पे अपडेट होगी क्या वो शेयर मेमोरी में, नहीं हो गई। यहाँ पे कितनी रह गई, 24। और CPU 2 के कैचे में कितनी रह गई, 24. 24. So this is a cache coherence problem in a multiprocessor, as multiple processor operate in a parallel and independently multiple cache may possess the different copies of the same memory block. So this create an cache coherence problem. अब ये प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि खुद का इसका कैचे है और कैचे में आपकी खुद की वैल्यू रखते हैं और शेयर मेमोरी में अलग होती है, तो कैचे कोहेरेंस यहाँ पे हो सकता है। सो देर आर थ्री डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ कैचे कोहेरेंस। एवरी राइट ऑपरेशन appear to occur instant instantly. Okay, all processor see the exactly the same sequence of the change of the value for each separate operand, and different processor may see an operation and assume different sequence of value. This is known as non-coherent behavior. So there are various cache coherence protocols in a multiprocessor system. So these are, so there are some of the multi means protocol we are going to use to overcome this particular problem, or there is some protocols is there. So MSI protocol, that is modified, shared and invalid. Then MOSI protocol, that is modified, owned, shared and invalid. MESI protocol, that is modified, exclusive, shared, invalid. And MOVSI protocol, that is modified, owned, exclusive, share and invalid. So these important terms, modified means what, it means that the value in the cache is dirty, means that is the duplicate value, and that is the value is the current cache is different from the main memory, that is a modified, means you have to modify that particular value, whatever the value in the main memory, that value must be in the cache. So you have to check that, you have to modify if there is any value in the cache. Exclusive means what? It means that the value present in the cache is same as the present in the main memory, that is value is clean. Means suppose in a processor 1 cache value of x is 24, and in the shared memory the value of x is 24, then you can say it is a exclusive value, means the value is clean. Then shared, it means that the cache value holds the most recent data copy, and that is what shared among all the cache and main memory as well. That is shared, means what is the value in a cache and what is the value in the shared memory should have the recent copy of the data, and that is what the share among all the cache and main memory as well. Then own, it means that the current cache holds the block in, is now the owner of that block, and that is having all the rights for that particular blocks. Then invalid, this state that the current cache block itself is invalid and it required to be a fetch from other cache or the main memory. So this type of particular protocol is there to overcome the cache coherence in a multiprocessor which is going to share the same memory, that is modified, exclusive, shared, owned, invalid. So there are three type of coherence. We can see directory base. Directory base means what? ये आपको समझ में आ गया क्या? क्या ये? Coherence किसे बोलेंगे? What are the different protocols? How we can overcome this particular cache coherence? समझते का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, काय करणार मॉडिफाय व्हॅल्यू. मॉडिफाय म्हणजे काय, डायरेक्टली व्हॅल्यू आहे त्या कॅचेमध्ये आपल्याला अपडेट करावं लागेल. एक्सक्लुझिव्ह मीन्स द व्हॅल्यू इन द value is clean, means whatever the value in the cache and the
main memory, that is same, that is then shared. It means that all the cache value holds the most recent data copy, and that is what shared among all the cache and main memory as well. Owned means it means that the current cache holds the block of its is now the owner of that block, and that is having all the rights of the particular blocks, that is owned. And invalid, the state that the current cache block itself is invalid and it is required to be fetched from other cache or main memory. So there are three type of coherence. Directory base. So in a directory based system, the data being shared is placed in a common directory that maintain the coherence between the cache, and the directory acts as a filter through which the processor must ask a permission to load an entry from the primary memory to its cache. When an entry is changed, the directory either updated or invalidates the other cache with that entry. Means to overcome this particular cache coherence, we have the three type of coherence. Directory base means we have to put the value in the directory, and that particular directory is being shared with the all the processor, and that data is being shared in a, and it is placed in a common directory that maintain the coherence between the cache, and that directory act as a filter through which the processor must ask permission to load an entry from the primary memory. If a processor want to change the value, then he has to make the entry in that particular directory and to its cache. So when an entry is changed, the directory either update or invalidate the other cache with that particular entry. अगर वो वैल्यू अगर चेंज करनी है तो डायरेक्टरी क्या करेंगी, it will either update the value in the shared memory in the all the cache, or it will invalidate the value of that particular operand. Understood? That is directory base. डायरेक्टरी में वैल्यू रखेंगे, अगर किस प्रोसेसर को लगता है को वैल्यू चेंज करनी है तो वो आके वहाँ पे चेंज करेगा, लेकिन वहाँ पे मेंटेन रहेगा एंट्री इस मल्टी प्रोसेसर ने, इस प्रोसेसर ने क्या किया है, वैल्यू चेंज किया है। और वो डायरेक्टरी क्या करेगी, दूसरे मेमोरी में और दूसरे कोहेरेंस कैचे मेमोरी में वो वैल्यू क्या करेगा, अगर एक तो अपडेट करेगा या इनवैलिड करेगा, दैट इज अ डायरेक्टरी बेस। अंडरस्टूड? यस, Yes, sir. समझ लेगा। हाँ नहीं तो बोलिए कम से कम। Yes, sir. Yes, sir. चलो, सो विल, दैट इज डायरेक्टरी कोहेरेंस। डायरेक्टरी में वैल्यू रखेंगे, अगर प्रोसेसर को लगता है चेंज करना है तो वो वहाँ पे जाके चेंज करेगा, और डायरेक्टरी में क्या हो जाएगा, मेंटेन रहेगा इस प्रोसेसर ने वैल्यू चेंज किया है। और डायरेक्टरी क्या काम करेगी फिर, जो दूसरे प्रोसेसर का कैचे है, जो शेयर मेमोरी है, उसमें वैल्यू क्या करेगी, एक तो वैलिड करेगी या इनवैलिड करेगी। मीन्स एक तो अपडेट करेगी या इनवैलिड करेगी। अंडरस्टूड? दैट इज डायरेक्टरी बेस। Then snooping. So this particular snooping is introduced in 1983. So snooping is the process where the individual cache monitor the address lines for access the memory location that they have cache. It is called as a write invalidate protocol, and when a write operation is observed to a location that a cache has a copy of, and the cache controller invalidate its own copy of the snoop memory location. अभी क्या करेगा, स्नूपिंग में क्या हो जाएगा, अगर ऑपरेटर प्रोसेसर वन ने अगर वैल्यू चेंज किया तो दूसरा जो प्रोसेसर है उसका खुद का वैल्यू क्या करेगा, इनवैलिड करेगा। सो हाउ, सो दैट इज अ स्नूपिंग।
So it will invalidate the cache or it will monitor the address line for access the memory location. एड्रेस लाइन है वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा। अगर वो एड्रेस लाइन में अगर चेंज हो गया तो खुद का वैल्यू क्या करेगा, इनवैलिड करेगा। अगर दूसरे प्रोसेसर से एड्रेस लाइन चेंज हो गया तो दूसरा प्रोसेसर खुद का मेमोरी का कैचे खुद का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। दैट इज स्नूपिंग। Then snarfing, so it is a mechanism where the cache controller watches both the address and the data in attempt to update its own copy of the memory location when a second master modifies the location in the main memory. When a write operation is observed to a location that a cache has a copy of, the cache controller updates its own copy of the snapped memory location with the new data. So when a particular update is observed in the main memory, then each cache will modify its own value. That is snarping. Understood? Yes, sir. स्नूपिंग में क्या हो जाएगा, एड्रेस लाइन में अगर चेंज होता है तो क्या करेगा, वो देखेगा अरे एड्रेस लाइन में कोई तो भी वैल्यू क्या कर रहा है, अपडेट करेगा है, तो खुद का वैल्यू क्या करेगा, इनवैलिड कर देगा। अंडरस्टूड? दैट इज स्नूपिंग। एंड डायरेक्टरी बेस में डायरेक्टरी में वैल्यू रखी जाएंगी और किसी ने अपडेट करने की कोशिश की प्रोसेसर ने, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा किस प्रोसेसर ने वो वैल्यू क्या किया है, अपडेट किया है। देन डायरेक्टरी विल चेंज द वैल्यू ऑफ अदर कैचेस एंड द शेयर्ड मेमोरी, वैल्यू ऑफ शेयर्ड मेमोरी। अंडरस्टूड? That is the coherency mechanism. There are three types of coherence. Understood? Yes, sir. Yes, sir. इंटर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंटर प्रोसेस एंड इंटर कोर कम्युनिकेशन। अभी इंटर प्रोसेस या इंटर कोर, अभी ये कोर क्या होता है रे, व्हाट इज मीन बाय कोर? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मल्टी प्रोसेसर, मल्टी कोर। कौन बता सकता है मुझे? यस, क्या है कोर? कोई बताएगा? हमारा हो चुका है ना ये कोर। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर? रोहन? Multiprocessor is a two or more processor or CPU present in same computer. ओके, दैट इज मल्टी प्रोसेसर। और मल्टी कोर? मल्टी कोर का मतलब यह है एक प्रोसेसर में उसी का एक छोटा सा प्रोसेसर होता है और एक प्रोसेसर में बहुत सारे कोर हो सकते हैं। मीन्स एक प्रोसेसर है, ओनली वन प्रोसेसर इज देयर एंड इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर यू मे हैव द फोर सब प्रोसेसर, दैट इज फोर कोर। that core is nothing but it will execute the instruction of the processes. core means ये छोटा प्रोसेसर ही होता है, वो आपके प्रोसेसर में होता है। मीन्स यू हैव द यूनि प्रोसेसर, आपके पास एक ही प्रोसेसर है, आपका कंप्यूटर एक ही प्रोसेसर है। योर कंप्यूटर इज नॉट मल्टी प्रोसेसर, योर कंप्यूटर इज यूनि प्रोसेसर, बट इट मे हैव द मल्टी कोर, यूनिकोर मल्टी कोर प्रोसेसर। ओके, एकाच Yes, प्रोसेसर मध्ये कोर असतात। हो गया ना ये हमारा? ये देखो, ये एक ही प्रोसेसर है, ये पूरा दिख रहा है ना तुमको, ये एक ही प्रोसेसर है, बस उसमें क्या है, चार कोर है, कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4। एक कोर क्या होते हैं, कोर मीन्स छोटे प्रोसेसर होते हैं। ए है ना, उसका खुद का प्रोसेसर होता है, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, है क्या नहीं? दैट इज मल्टी कोर। और ये सिंगल कोर।
समझ में आ गया? Yes, sir. समझ में आ गया? कोर अभी को बताइए मुझे, कोर क्या होता है? कोर यानी कि एक प्रोसेसर ही होता है खुद, छोटा प्रोसेसर होता है। मीन्स जो आपका प्रोसेसर है, मेन प्रोसेसर, उसमें ये कोर होते हैं, छोटे छोटे सब पार्ट होते हैं। अगर 4 इंस्ट्रक्शन आ गए एक प्रोसेसर का, तो चारों जगह क्या होगा, उसका इंस्ट्रक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। थोड़ा इधर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा कोर 2 में होगा, थोड़ा कोर 3 में होगा, थोड़ा कोर 4 में होगा। अंडरस्टूड? मीन्स एक ही प्रोसेसर है आपका, ये एक ही प्रोसेसर है, बट एक ही प्रोसेसर होने के बावजूद भी आपके पास कितने कोर है उस प्रोसेसर में? 4 कोर है। मीन्स एट अ टाइम यू कैन execute the 4 instruction at a time. You can execute the four process if you have the single processor in your computer. Understood? Yes, sir. Yes, sir. समजतंय का? इंग्लिश कळतं का? मराठी सांगायचं यस आता? सर, समजतंय सर. ओके. हाँ, कौन बताएगा अभी कोर क्या होता है? बताइए, व्हाट इज मीन बाय कोर? यार, क्या होता है कोर? कोर मीन्स व्हाट? इट इज अ स्मॉल प्रोसेसर विच इज present in the प्रोसेसर। आपका प्रोसेसर या क्वाड कोर होता, क्वाड कोर प्रोसेसर हो सकता है या हेक्सा कोर हो सकता है। क्वाड कोर मीन्स व्हाट? उस प्रोसेसर में 4 कोर प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? सोप्या भाषेत सांगतो, एक सिस्टीम आहे आणि त्या सिस्टीम मध्ये छोट्या छोट्या 4 सिस्टीम आहेत, सब सिस्टीम आहेत। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, फिर बताओ ना, फिर कोर क्या होता है आपके लैंग्वेज में? बताओ मुझे, व्हाट इज मीन बाय कोर? Single computing components with two or more separate processing unit. वेरी गुड, दैट इज कोर। आपका कंप्यूटर मल्टी कोर मल्टी प्रोसेसर हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आप कह सकते हो मेरा कंप्यूटर मल्टी कोर मल्टी प्रोसेसर है? हाँ नहीं में जवाब दीजिए मुझे, यस नो। हो सकता है या नहीं हो सकता है? चलो फास्ट, कोविड बैच। Yes, sir. हो सकता है, वेरी गुड। सो इंटर प्रोसेस, हाउ द पर्टिकुलर कोर कैन कम्युनिकेट, दैट इज इंटर कोर, इंटर प्रोसेस, इंटर कोर communication. So a process can be of two types, that is independent process and cooperating process. An independent process is not affected by the execution of other process. Means that when that particular process want to execute, that particular process is not dependent on other process. Sometimes what happen, sometimes suppose process B want to execute, then he has to wait until process A not complete. Mean after completion of process A, process B has to be execute. So process B is the cooperating process. If he has to wait for or that particular process has to be dependent on other processes, that is a cooperating process. And a process which is not depending on the other, that is independent process for its execution, for its own execution. So through one can think that those processes which are running independently will execute very efficiently. In a reality, there are many situations when cooperative nature can be utilized for increasing the computational speed. So coherence and modularity. So inter-process communication, that is IPC, is a mechanism which allow the process to communicate with each other and synchronize their action
So the communication between the processes can be seen as a method of cooperation between them. Process can communicate with each other through both of the shared memory or by through the message passing. अभी ऐसी भी सिचुएशन होती है ना कि आप एक जगह गाना सुन रहे, दूसरी जगह वर्ड में आपका रिज्यूम टाइप कर रहे, तीसरी जगह नेट सर्फ कर रहे, ब्राउज ब्राउज का इस्तेमाल कर रहे हो, होता है ना? हाँ या नहीं बोलिए, या नहीं होता है कभी ऐसा? होता है। है कि नहीं? एक जगह मीन्स एक ही बार आप तीन तीन काम आपके कंप्यूटर के ऊपर चालू है। अभी क्या होता है, आपका जो प्रोसेसर है क्या करता है, कभी प्रोसेस वन को टाइम देता है, कभी प्रोसेस टू को देता है, कभी प्रोसेस थ्री को देता है, और इतने फट से देता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि सिंगल प्रोसेसर होने के बावजूद भी हमारे तीन ही प्रोसेस क्या हो रहे, एग्जीक्यूट हो रहे। अंडरस्टूड? सो हाउ द डिफरेंट प्रोसेसेस आर communicate with each other. So there are two way of communication, that is inter-process communication. So inter-process can be communicated with each other through the shared memory or through the message passing. Okay, so tomorrow we will see tomorrow. Okay, we will see tomorrow. Good, goodbye. Yes, sir. Yes, sir.